Thank you, Christina. Thank you for stopping by. Yeah, that's great. Really? Like that looks really good with that outfit. Oh, I'll make some fun. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारम प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, क्या हाल है। आज आपको दिखाएंगे कुछ आर्ट वर्क यूएनटी की स्टूडेंट का। उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है और उनके अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। आइए जानते हैं इनकी फ़िलॉसफ़ी। Hello there. So today we are with an artist from University of North Texas. Let's hear from her about her work. Hello, please tell us about you. My name is Aurora Isabella. I'm a painter and sculptor. I recently graduated from the University of North Texas. Congratulations. I am a environmentalist and climate activist, and that kind of serves as like a foundation for a lot of my work and where I draw a lot of my inspiration from. A lot of the work here in the show, like from glancing at it, has a very natury kind of feel to it and references a lot of that. I have done a lot of cave paintings, such as the Carlsbad series and a lot of other rock formations, such as Colorado Springs series. But I also enjoy doing a lot of forest series as well, such as sun drops and the Hill Spring trails. So, as you mentioned that your inspiration has been nature, my next question would be: nature is diverse, and there are so many aspects of nature. Why did you decide, or why your motivation become this aspect of nature? Yeah, so the aspects of nature I kind of like centered in and like made my pieces about. Personally for me, and for a lot of people, I imagine, whenever we're in certain places, we'll find something really beautiful about the scene, whether that's the way that the whole scenery is or a certain detail about it. And like I mentioned, with my activism, the reason that I strive to try and take care of these places is these places of beauty, and just kind of knowing a bit deeper about it. So we can see that your work has been displayed here. Would you please show us some of your favorite artifacts? Definitely. So I think this is one of my favorite pieces. While it is one of the more abstract and experimental pieces in the show, I think it allows for a little room for the viewer. It allows a little room for the viewer to kind of use their imagination, kind of like whenever we're out in nature and going outside into the natural world, we're able to kind of view it with this sense of like awe and inspiration. And so hopefully with that and with the abstraction that I used in this and some of these tree elements, like the yellow and the green, I also added this element of glitter that, while it is kind of a crafts or contemporary material, and it can be used in a bit of a kitschy way, I wanted to lean into it being glittery and in a thing. It just looks great, and I think that can catch the eye of the viewer and kind of draw them in a bit better. So this piece is also an abstraction from this piece is kind of leaning into me experimenting with. So this piece, I'm really leaning into kind of experimenting with abstraction in a sculptural format outside of like the realm of painting. I'm also experimenting with this concept of drawing in the open air through the use of wire, playing with organic shapes, because that is something I really enjoy kind of working with and leaning into versus the harder, more geometric styles and shapes that you might see in other forms of art. But yeah, it's beautiful. So these rings represent air, you said? they don't represent air. So
this piece also, it leans away from the primary idea of the show about nature, romanticism, and the sublime in the natural world and stuff like that. This one kind of thinks, I think a lot more about kind of automatic thinking processes and daydreaming, aimlessly thinking about stuff, whether you're kind of driving your car or walking to and from places like work or school. So this is just a format of kind of being free. The circles don't necessarily represent any forms of nature, but I think subconsciously for me, a lot of these shapes are referencing things that I have seen in nature because of the way that they are shaped. So here is my last question. Most of your work represent absurdity. Your work is super complex, and we do not get a clear meaning from your work. So, do you prefer to leave the audience, the viewer, to decipher your painting, your artwork, or the meaning you are trying to deliver in your artwork? I think initially when I started making a lot of the works, looking at it all chronologically, I initially really liked the idea of leaving the meaning up to the viewer, and in a way, I feel like that kind of lets them do the heavy lifting. But as I'm getting deeper into this specific topic, I don't like leaving the meaning up to the viewer. But I think I was doing that initially because I didn't know what to say. But now that I've been making work over the past 4 or 5 years about a specific topic, or more so the last 3 years have been about a specific topic, I'm figuring out and distilling what I really want to say to the viewer and to the audience. And with each work that I'm creating, I'm getting a clear meaning of what I want to say and how to say it to the viewer. So sometimes these motive abstractions don't really make sense, like the glitter. Sometimes I'll say it's pretty and it kind of draws them in, but other times they'll be used with a more specific manner, such as trying to reference the use of plastics in our day-to-day life and kind of just contemporary living today. So Thank you so much, Aurora. It was great having your work at University of North Texas. By the way, I want to end. All right, thank you so much, Aurora. It was great to have your work. It was great to know about your opinions, about your inspiration. Well, I want to say your dress is looking very beautiful. Yeah. So I wish you all the best for your work, for your future. Just stay rising and keep bringing your wonderful collection to university. thank you so much. I really appreciate you interviewing me today. Bye. तो जनाब, तो ये थी हमारी UNT की आर्टिस्ट, इंतहाई टैलेंटेड आर्टिस्ट. अच्छा, तो ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये हमारे यूनियन के हेल्प डेस्क के बिल्कुल पीछे की जगह है, और ये ऐसे राउंड सी जगह बनाई गई है. बेसिकली इसका मकसद ये है कि हर मंथ जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट का डिपार्टमेंट है, वहाँ के स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं. फिर उनके जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं, शाहकार, उनको वो लोग यहाँ पे लाते हैं और एक पूरे महीने के लिए यहाँ पे वो डिस्प्ले पे उसको लगा देते हैं. तो आर्ट का आपको पता होगा कि उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं और काफ़ी मेहनत से सब कुछ बनता है. पेंट्स और डिफरेंट किस्म के कलर्स, और ये तो लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, फैब्रिक का भी इस्तेमाल होता है. सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट. तो ये किया जाता है कि उस आर्ट वर्क को महज डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं किया जाता, उसे यूनियन में लाया जाता है और इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है इस जगह पे हर महीने. इससे ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स भी उस आर्ट वर्क को देख पाते हैं और उसको एंजॉय कर पाते हैं, बिकॉज इट्स सो सूदिंग एंड इट्स सो प्लीजिंग टू सी दिस आर्ट वर्क. तो हर स्टूडेंट
अपने इंटरेस्ट के हवाले से, अपने टैलेंट के हवाले से डिफरेंट किस्म की आर्ट प्रोड्यूस करता है और उसे यहाँ पे ला के रख देता है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है जो कि अभी ग्रेजुएट भी हो रही हैं। तो इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी एंड दे वर सो हैप्पी। और फिर इसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी यहाँ पे बुलाया हुआ था। तो मैंने इत्तेफाक से इसको देख लिया कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे सेरेमनी चलेगी और उससे पहले खाना भी सर्व किया गया था। तो मैंने कहा चलो यार मैं फिर इनका इंटरव्यू क्यों ना ले लूँ। तो मैं वहीं पे ही थी और मेरी क्लास स्टार्ट होने में टाइम था, तो मैंने जाके इससे सवालात पूछे। तो ये जो है एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और एक एक्टिविस्ट है। तो इनकी जो फ़िलासफ़ी है इंस्पायर्ड है फ्रॉम नेचर। और ये जो है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इस तरह की चीज़ों इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं कि मीनिंग को वो डिलीवर करें। और इंस्पिरेशन उनकी ऑब्वियसली नेचर है, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। तो ये सारे उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो ये अच्छी मज़े की यहाँ पे गैदरिंग होती है। आप रिफ़्रेशमेंट ले लेते हो और रिफ़्रेशमेंट एंजॉय करते करते आप जो हो आर्ट वर्क को भी एंजॉय करते हो और गपशप भी मारते हो। तो मैंने इसका इंटरव्यू लिया, मज़ा आया। आई बिलीव कि इस तरह की इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ उसी फील्ड के स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती है बल्कि हमें भी मिलती है, क्योंकि इमेजिनेशन सबका अलग होता है। और फिर आप ये देखते हो कि यार किसने किस तरीके से आर्ट वर्क किया है, कितनी मेहनत की हुई है उसके ऊपर, वो सब देख के बहुत इंस्पिरेशन लगता है। और फिर आँखों को अलग अलग किस्म के रंग देखना भी बहुत अच्छा लगता है। गोल्डन कलर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, मेटल का इस्तेमाल करते हैं। यार एक बार तो ऐसा आर्ट वर्क इन्होंने डिस्प्ले किया था जिसमें इन्होंने सारे फ्रूट्स ला के रखे थे। अनफॉर्चुनेटली वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो पूरा साइंस था, फ्रूट्स लगे हुए थे और वेजिटेबल्स भी थी। फिर आपने ये करना था कि कोई माइक्रोफोन को उठा के पता नहीं क्या दो को टच करना होता था। फिर एक हेडफोन रखा हुआ था, उसको आप अपने कान पे रखो और फिर देखो कि कौन सी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। तो वो अजीब अजीब से साउंड प्रोड्यूस होते थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। उसमें ब्लड ग्रुप भी था कि आप इस ब्लड ग्रुप के हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, अगर उसके हो तो वहाँ पे। दैट वाज ए साइंस एंड आर्ट आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड। खैर ये वाली अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं की और मैंने इस लड़की को बोला प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दे दो, मैं व्लॉग बनाऊँगी तुम्हारे ऊपर। तो दिस वाज अबाउट our UNT artist. I hope you liked the vlog. Please like and subscribe to my channel to watch more videos like this. Bye. I honestly would discuss it with her. Yeah, just discuss it with her. You got a job now, like.